ओके, तो रात के 3 बज रहे हैं और अपन पैसेज सॉल्व करते हैं आरसी का। तो इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद ये आ जाएगा थोड़ा सा छोटा हो सकता है। कि ऐसे हो जाएगा क्या जस्ट। फर्स्ट थर्ड है, फोर्थ, बाकी पर आंसर्स लिख लेंगे कई जगह। ठीक है, तो ओके, तो आरसी के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ऑथर सजेस्ट दैट बिली हॉलीडेज ट्रैजिक अपील lay primarily in which of the following is the most accurate inference about the author's perspective on Billie Holiday's life and legacy. The author compares Billie Holiday's performance style to someone lying still while watching his legs being amputated. What can be inferred from this metaphor? Which of the following can be reasonably inferred from the passage? पैसेज तो छोटा है, चलिए अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो बिली हॉलीडे डाइड अ फ्यू वीक्स अगो. I have unable until now to write about her, but since she will survive many who receive longer obituaries, a short delay in one appreciation will not harm her or us. When she died, we, the musicians, critics, all who were ever transfixed by most heartrending voice of the past generation, grieved bitterly. There was no reason
There was no reason to. Few people pursued self destruction more wholeheartedly than she, and when the pursuit was at an end at the age of 44, she had turned herself into a physical and artistic wreck. Some of us gallantly to pretend otherwise, taking comfort in the occasional moments when she still sounded like a ravaged echo of her greatness. Others had not even the heart to see her listen anymore. We preferred to stay home and, if old and lucky enough, to own the incomparable records of her heyday from 1937 to 1946, many of which are not even available on British LP to recreate those coarse textured, serious, essential, and unbearable sides which give her a sure corner of immortality. Her physical death called, if anything, for relief rather than sorrow. What middle age would she have faced without the voice to earn money for her drinks and fixes, without the looks, and in her day she was hauntingly beautiful to attack the men she needed, without business sense, without anything but the disinterested worship of aging men who had not yet, irrational though it is, our grief expressed beneath Holiday's art, that of a woman for whom one must be sorry. The great blues singers to whom she may be justly compared played their game from strength, lioness, though often wounded or at bay. Did not Bessie Smith call herself a tiger ready to jump? Their tragic equivalents were Cleopatra and Phaedra. Holidays was an embittered Ophelia. She was the puny heroine among blues singer, or rather among jazz singer, for those she sang a cabaret version of blues incomparably. Her natural idiom was the pop song. Her unique achievement was to have twisted this into a genuine expression of the major passion by means of a total disregard of its sugary tunes, or indeed of any tune other than her own few delicately crying elongated notes, phrased like Bessie Smith or Louis Armstrong in sackcloth, sung in a thin, gritty, haunting voice, whose natural mood was an unresigned and voluptuous welcome for the pains of love. Love has sung or will sung Bessie's song for Porgy as she did. It was this combination of bitterness and physical submission, as of someone lying still while watching his legs being amputated, which gives such a blood curdling quality of her strange fruit, the anti lynching poem which she turned into an unforgettable art song. Suffering was a profession, but she did not accept it. Little need to be said about her horrifying life, which she described with emotional, though hardly with factual truth, in her autobiography, Lady Sings the Blues. After an adolescence in which self-respect was measured by girls' insistence of picking up the coins thrown to her by clients with her hands, she was plainly beyond help. She did not lack it, for she did the flair and sculptor's honesty of John Hammond to launch her, the best musician of 19th, notably Teddy Wilson, young the boundless devotion of all serious connoisseurs and much public section was too late to arrest a career of systematic impetus himself. To be born with both beauty and success in the neighborhood of Baltimore handicap, even without fame at the age of 10, under the exchange, but she destroyed herself. She sang unmelodious, profound, and heartbreaking. It's impossible not to weep for her or not to hate the world which made her the way she was. ट्रैजिक अपील को the author says that Billie Holiday's tragic appeal lay primarily in tragic देखो and yet irrational though it is, our grief expressed Billie Holiday's art, that of a woman for whom one must be sorry. The great blue singers to whom she may be justly compared. The great blues singers to whom she must be justly compared played their game from strength. Lioness, though often wounded or at bay, did not
Bessie Smith calls herself a tiger ready to jump. Their tragic equivalents were Cleopatra and Phaedra. Holidays was an embittered Ophelia. She was the pupil heroine among the blues singer, rather than just among the rest, although she's in a cabinet which is the music comparatively. Mhm. मेरे ख्याल से फर्स्ट का जो है वो सी ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं सी को मार्क करूँगा। ठीक है, फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इन्फरेंस अबाउट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑन बिली हॉलिडेज लाइफ एंड लीगेसी। इसका बी ऑप्शन, टू का बी। थर्ड, द author compares Billie Holiday's performance style to someone who lying still while watching his legs every this metaphor. थ्री को मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे ही करना है तो कर देना, बाकी अटेम्प्ट नहीं, इसके मार्क्स ऐड नहीं करूँगा। ये तो मेरे ख्याल से नहीं है। कुछ मार्क करना होगा तो मैं डी मार्क कर दूंगा, बाकी मैं अटेम्प्ट ही कर रहा है इसको, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो थ्री का डी है। और फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिजिबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, हॉलीडेज वर्क करेक्शन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर योर ओन मोड। तो फोर का डी मार्क होगा। मैं सही आंसर्स देख के आपको बताता हूँ। थोड़ा तो मेरा आरसी इम्प्रूव हुआ है, जैसे यहाँ 4 क्वेश्चन में टोटल होनी चाहिए नंबर 4
3 ज़ा 12। तो अभी मेरे आ रहा है 4 2 ज़ा 8 -1 7 7 आ रहा है आउट ऑफ 12। थोड़ा तो इम्प्रूव है। पहले मेरा मतलब चारों ही गलत हो जाते थे, या एक सही और 3 4 गलत हो जाते थे। तो अभी ये रेशो ठीक है थोड़ा। जैसे तो इसमें क्या क्या सही है? अपना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, वो गलत है अपना, ये गलत है। द ऑथर सजेस्ट दैट बिलीज ट्रेजिक अचीवमेंट्स लिव प्राइमरली इन, इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन क्या है कि जो ऑथर विशेष करते हैं कि बिली हॉलिडे का ट्रेजिक अपील लिव प्राइमरली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सेंसुअल डिफियंस इन हर परफॉर्मेंस। तो ये है। अब उसके बाद सेकंड अपना सही है, थर्ड अपना सही है, नहीं थर्ड भी अपना गलत है। थर्ड में क्या है? थर्ड में जो अपन ने दिया है कि her voice dramatized pain and exaggerated theatrical way diminishing the authenticity of her expression। तो इसमें है कि her music conveyed an unbearable conscious submission to emotional pain marked by both awareness and helplessness। और डी भी सही है। तो अपने 7 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 12। तो इसी हिसाब से पैसेज है, तो आप अटेम्प्ट करिए, उसके बाद देखिए, है ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है ना। और इसके सल्यूशन क्या है, तो आप पैसेज पढ़िए और अपने हिसाब से सल्यूशन देखिए। और इस पर्टिकुलर पैसेज के क्या सही सल्यूशन है और क्यों है। देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है वो बेटर, जो हर म्यूजिक कन्वे अनएबल गेट कॉन्शियस सबमिशन टू इमोशनल पेन मांगना बहुत अवेयरनेस एंड हेल्पलेसनेस, बेटर ऑप्शन है बजाय कि हर वॉइस ड्रामेटाइज पेन इन एग्जैक्ट थेटिकल वे डिमिनिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ हर एक्सप्रेशन। ये गलत है और मेरे को भी लग रहा है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, उसमें जो कॉम्बिनेशन है वल्गैरिटी एंड सेक्सुअल डिफरेंस, इसका परफॉर्मेंस ये बेटर ऑप्शन होगा बजाय किसी से। तो आप पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद देखिए कि क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और ये सही आंसर है, ये आखिरी में देख लीजिए। बाकी एग्जैक्ट आरसी के सॉल्यूशंस तो मैं भी नहीं बता सकता, है ना। मैं सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करके ही दिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। तो हो सकता है मैं खुद वीडियो देख के समझ लूँ, लेकिन एक्सप्लेन करना मन होगा तो करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। जहाँ तक है नहीं करूँगा, क्योंकि आरसी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ आरसी में। मैं खुद इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरे को ये लगता है आरसी के रीज़न तो ठीक है, आप मैक्सिमम आरसी अटेम्प्ट करने का चाहिए। और ये देखिए कि आपकी एक्यूरेसी भी धीरे बढ़ती रहे। एटलीस्ट अगर आप 2 आरसी करेंगे तो 14 नंबर तो आपके ये आ जाएंगे। और बाकी की अगर आपने 3 वर्बल वाइज सही कर दिए तो 9 नंबर और 23 नंबर आ जाएंगे वीए में। अब अगर आप पूछें 23 नंबर से क्या होगा मेरा, तो 23 मार्क्स इन ये आरसी परसेंटाइल, तो आपके 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में आ जाएंगे। ऑलमोस्ट आप 90 परसेंटाइल ही मानिए। तो आपको थोड़ा सा और तीन आरसी करेंगे, 7 आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे आपके। 30 मार्क्स से कैट परसेंटाइल कितना हो जाता है? 30 मार्क्स इन वी आर सी, आपके 95 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल से ऊपर आता है। तो आपको और अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बेसिक सी बात ये है ना, क्योंकि 95 परसेंटाइल में तो ज़्यादा कुछ कई बार नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू।